હેલો એન્જિનિયર્સ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે જે ચેપ્ટર ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ ખરેખર એન્જિનિયર્સ માટેનું ચેપ્ટર છે. નામ છે એનું સાંકવ. ચેપ્ટર 11 સાંકવ. હવે સાંકવ આપણી પાસે ચાર પ્રકારના છે: વર્તુળ, પરવલય, ઉપવલય, અતિવલય. હવે જે વર્તુળનો ઉદ્ભવ થાય છે એ સાવ જુદી રીતે થાય છે, અને પરવલય, ઉપવલય, અતિવલયનો જે ઉદ્ભવ છે, જેનો ઇતિહાસ છે, એ સાવ જુદો છે. પણ છતાં એમને ભેગા લેવામાં આવે છે. વર્તુળ એમની જોડે જ ઉદ્ભવ થયેલો છે, પણ આપણે એને સાવ જુદી રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ. હું ત્યાં પણ વર્તુળનો ઇતિહાસ બતાવીશ. અત્યારે આજે આપણે પહેલો ટોપિક ખાલી વર્તુળ એટલા માટે લઈ રહ્યા છીએ કે પહેલા જ દિવસે હેવી ના થઈ જાય. ખરેખર ચેપ્ટર બહુ ડેન્જર બી છે, મજાનું બી છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ બી છે અને કામનું બી છે. પણ એટલું કહી દઉં કે ચેપ્ટરમાં તમને સમજૂતીની સાથે સાથે એટલા ઓછા દાખલા આપ્યા છે કે સમજ પડે એ પહેલા આપણે બીજા ટોપિક પર જતા રહીએ. પહેલા આ પરવલય, ઉપવલય, અતિવલયના આખા ચેપ્ટર્સ હતા. વર્તુળ નામનું આખું ચેપ્ટર 5-6 સ્વાધ્યાય, પરવલય નામનું આખું ચેપ્ટર 3-4 સ્વાધ્યાય, ઉપવલયનું આખું ચેપ્ટર. એની જગ્યાએ અડધું સ્વાધ્યાય બી નથી એનું. તો હવે તમે સમજો કે તમને ટેસ્ટ ક્યાંથી આવવાનો. જે વસ્તુ થાળી ભરીને મળતી હોય એના બદલે અડધી કટોરી પણ ના મળે તો શું મજા આવે. પણ છતાં આપણે એનો આનંદ માણવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરીશું. જેટલી જરૂર છે બધી વસ્તુ તમને આમાં એક્સ્ટ્રા પણ સમજાઈશ તો જ કામનું છે. બાકી તમે દાખલા ગોખ્યા હોય એવું લાગશે. તો આજે હું સીધો વર્તુળ પર પ્રકાશ પાડું છું. વર્તુળ એક એવો ટોપિક છે કે જે આપણાથી ફેમિલિયર છે, તમે જાણો છો, શીખેલા છો, ભણેલા છો, એટલે એમાં મારે બહુ પેલું કરવું નહીં પડે. પણ દાખલા જુદી રીતના આવશે. જે 10મા ધોરણમાં તમે દાખલા ભણીને આવ્યા છો એ રીતના દાખલા નહીં આવે. આખો કોન્સેપ્ટ બદલાઈ જશે, એની જોડેનો આપણો સંબંધ બદલાઈ જશે. અત્યાર સુધી વર્તુળ દોરીને વર્તુળ લખતા હતા, યા તમે આવું લખતા હતા કે વર્તુળ P3 એટલે P કેન્દ્રિત 3 ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ. હવે એવું નહીં લખીએ. હવે આપણે એને સમીકરણથી ઓળખીશું, કારણ કે હવે આપણને ટેવ પડી ગઈ છે કોની? સમીકરણની. તો સૌથી પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ સર્કલ. Introduction of the circle, વર્તુળની પરિકલ્પના. We are going to start the chapter number 11. The first topic is circle. There are so many topics like parabola, ellipse, hyperbola, but we will see in the next lecture. Today we are going to start this circle of this chapter. Chalo, what is the definition of circle? You know everyone what is the meaning of circle and what is the definition of the circle. Here it is given that, say, set of all the points of the plane. जो हवामान नहीं लेते, यहां से मैं बाहर नहीं लूंगा, प्लेन की ही बात करेंगे. Set of all the points of the plane which are at equidistance, सबका distance same होगा. So set of all these points is called a circle. This part is called the inner part of the circle. It is not circle. भाई बराबर याद रखना, दिमाग में डाल के रखना. This is called the inner part of the circle. This is exterior part of the circle and this is circle. आपने बैंगल देखी होगी, शायद आपको याद होगा, जो लड़कियां पहनती है वही बैंगल को we will say the circle. Inner part, inside, outside and itself. Remember it, right? So set of all the points of a plane which are at equidistance from a fixed point. This point is called the fixed point. Set of all the points of the plane, मतलब बाहर से मुझे नहीं लेना है, which are at equidistance from the fixed point is called a circle. This fixed point is called the center of the circle. This fixed point is called the center of the circle, and distance from center to the point of the circle is called the radius. The distance from the center to the point of the circle is called radius. Remember it. So center, circle and radius, तीन चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी. गुजराती में આપણે લઈએ તો સમતલના કોઈ નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન
અથવા અચળ, અચળ અથવા સમાન બંને શબ્દ તમે મૂકી શકો. અચળની બાજુમાં તમે સમાન શબ્દ મૂકશો તો એમાં કંઈ જ ખોટું નથી. તો સમતલના નિશ્ચિત બિંદુથી અચળ અથવા સમાન અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના ગણને સમતલ કહે છે. તે નિશ્ચિત બિંદુને વર્તુળનું કેન્દ્ર કહે છે અને વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળ પરના કોઈ બિંદુ સુધીના અંતરને તે વર્તુળની ત્રિજ્યા કહે છે. આ બધી વસ્તુ તમે જાણો છો. મેં અમારું નવું કંઈ જ નથી કીધું, બધું જાણતા હતા એટલે સમય બચાવવા માટે મેં એ લખી રાખ્યું છે અને આપ સર્વે જાણો છો. હવે જે નવી વસ્તુ ઉપર આપણે ફોકસ કરવા જઈએ છીએ, જે આપણા કામની છે, જે આપણા માટે ટોટલ નવી અને ઉપયોગી છે, એ આ બધું તમારી પાસે હતું જ, રાઈટ? તો હવે પહેલું જ હવે સમીકરણથી આપણે વર્તુળને ઓળખવાનું છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ સર્કલ. સો we will learn all the conics with their equations. Remember it, right? So first theory, equation of circle whose center is HK and radius is R. Equation of circle whose center is HK, or we can say CHK. C means point, HK and radius is R. જેનું કેન્દ્ર CHK અને ત્રિજ્યા R હોય તેવા વર્તુળનું સમીકરણ. જેનું કેન્દ્ર CHK અને ત્રિજ્યા R હોય તેવા वर्तुळનું. बहुत ही सिमिलर टॉपिक है, इजी भी है. See, by the diagram it is given that HK is center of the circle and the radius of circle is R. Both the things are given. चलो सपोज इट इज प्लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. તે પહેલા ચરણમાં રમી રહ્યું છે. સારો વિકાસ થયેલો છે. ઇટ ઇઝ હેલ્ધી સર્કલ. સેન્ટર ઇઝ CHK. C is notation for the point. HK are the coordinates and there is a point P which is on the circle. Suppose the coordinates of P are xy. Now remember it, the coordinates xy are called in the general form. They are not the fixed. They are unknown and variable form. P can move anywhere on this circle. Whenever it is on circle, every time. Whenever it is on circle, every time the distance from center will be same. That is called radius. જ્યાં સુધી વર્તુળ પર હશે ત્યાં સુધી કેન્દ્રથી હંમેશા તેનું અંતર ત્રિજ્યા જેટલું જ રહેશે. So radius is also given. Radius is also given. Radius means distance between center and a point of the circle. Radius means distance from the center to the point of the circle. કેન્દ્રથી વર્તુળના બિંદુ સુધીના અંતરને ત્રિજ્યા કહે છે. Let CHK be the center of the circle. Let PXY is point of the circle. Here CHK is
center of the circle and radius is r. Let pxy be the point of the circle. ધારો કે pxy એ વર્તુળનું બિંદુ છે. If pxy is point of the circle, it means distance between C and P will be radius. That implies distance between C and P will be radius. Squaring on both sides, બંને બાજુએ વર્ગ કરતા CP square is R square. Now we have the distance formula. Due to square root will not come. વર્ગ છે એટલે વર્ગમૂળ નહીં આવે. वर्गमूल में एक्सएम ની બાદબાકી નો વર્ગ વત્તા વાયએમ ની બાદબાકી નો વર્ગ हम लेते थे इन स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर बट ड्यू टू स्क्वायर वी विल नॉट टेक द स्क्वायर रूट दैट्स इंप्लाइज x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square which is called Cartesian equation of the circle જેને વર્તુળનું કાર્ટેશિય સમીકરણ કહે છે. Cartesian equation or કાર્ટેશિય સમીકરણ. और clear point. After that, if the coordinates of center are 0 0, if the coordinates of center are 0 0, if h is equal to 0 and k is equal to 0, that implies x square plus y square is equal to r square is called standard equation of the circle. જેને વર્તુળનું પ્રમાણિત સમીકરણ કહે છે. which is called standard equation of the circle જેને વર્તુળનું પ્રમાણિત સમીકરણ કહે છે. if radius is 1, if r is equal to 1, then x square plus y square is equal to 1 is called equation of unit circle. Equation of unit circle એને આપણે એકમ વર્તુળનું સમીકરણ કહે છે. એકમ વર્તુળનું સમીકરણ કહે છે. याद रखो भाई बराबर. सो रिमेंबर बराबर याद रखना कि ये जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन मींस प्रमाणित स्वरूप, यूनिट सर्कल मींस एकम वर्तुल, और भी कई फॉर्म्स ऑफ द सर्कल्स है हमारे पास, कई फॉर्म में है, पर एक ही साथ में अगर मैं आपको दूंगा देन यू विल बी कंफ्यूज. सो इसीलिए सर्कल पर ज्यादा फोकस इतना करने से पहले अगर हम थोड़े सम्स देख ले तो
ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1. सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में मैं ऐसा बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब हमें इक्वेशन पर ही फोकस करना है. वी हैव ओनली वन इक्वेशन. आप देखोगे तो ये जनरल फॉर्म है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर. अच्छा, ये इक्वेशन कब नोन फॉर्म में आएगा? when we have the coordinates of the center and radius. जब हमारे पास रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स એટલે કે કેન્દ્રના યામ હશે, at that time the equation will be in the known form. So total 5 क्वेश्चंस है, उसमें से मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपको करवाने वाला हूं. वी हैव ओनली वन इक्वेशन. आप देखते जाओ, बाकी के इक्वेशंस में आगे लेक्चर्स में समझाते जाऊंगा. आज मैंने एक ही इक्वेशन दिया है, उसी पर आज हमें फोकस करना है. रिमेंबर इट. चलो फर्स्ट हियर सेंटर एच के is 0 to and radius r is equal to 2. Therefore equation of circle, therefore equation is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Getting or not? h के प्लेस पे मैंने 0 रखा, y के प्लेस पे 2 एंड r इज इक्वल टू 2. सो ये इक्वेशन हो गया. अभी उससे मुझे नॉन फॉर्म में लाने के लिए एक्सपांड करना है. ये सबसे बड़ी बात है. यहीं से हम दूसरे इक्वेशंस डिराइव करेंगे. तो उसी के लिए ये प्लानिंग चल रहा है. रिमेंबर इट. देयरफॉर इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4. 4 चल बसे. सो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0. हर एक इक्वेशन को बराबर याद रखना. हर एक सब में से मैं कुछ न कुछ आपको आगे दिखाने वाला हूं. चलो फॉर दिस हियर एच के इज 1/2 1/4 and radius r is 1/12. Therefore equation of circle that is x minus 1/2 whole square plus y minus 1/4 whole square is 1 upon r square means 1 upon 144. आपको इसे सिंप्लीफाई करना ही याद रखना. चलो सो बाय expand this. Therefore x square minus 2 into x into 1/2 it will be minus x plus 1/4 plus y square minus 2 into y into 1/4 it will be y/2 plus 1/16 equal to 1 upon 144. Now multiply whole equation by 144 or you can say taking LCM 144. आप ऐसा बोलोगे भाई हमने 144 LCM लिया तो भी चलेगा, या पूरे इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा. सो इट विल बी 144x स्क्वायर माइनस 144x. अब 4 तो है ऑलरेडी, तो 4 3 जा 12 एंड 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस 36. ये होगा प्लस 144y स्क्वायर. 144 का हाफ होगा 72. सो इट विल बी माइनस 72y and 16 9s are 144. So it will be 9 is equal to 1. Now simplify this.
चलो 144x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म y स्क्वायर वाली प्लस 144y स्क्वायर, नाउ x वाली टर्म माइनस 144x, देन y वाली माइनस 72y, नाउ कांस्टेंट टर्म सी 36 प्लस 9 45 और 1 ये बाजू आएगा तो माइनस होगा, देन 44 इक्वल टू 0। अब सारे में से 4 कॉमन निकल रहा है, सी हर एक जगह से 4 कॉमन निकलेगा, देख लो आप, 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो टेकिंग 4 कॉमन, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x, 4 1 जा 4, 4 8 जा 18, 4 जा 72, so minus 18y minus 11 equal to 0, which is our required equation. Sorry, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, 36 plus 9 plus 45 minus 1 will be plus 44, so plus 11. This is our required equation. Now question number 5. Center is minus a minus b, so hk here, hk is equal to minus a minus b and radius r is equal to under root a square minus b square. Therefore equation of circle વર્તુળનું સમીકરણ x minus h whole square, so minus minus होगा plus, plus y minus minus b मतलब plus इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट गए काम से, अभी स्क्वायर को एक्सपांड कर दो, यू विल गेट द आंसर। देयरफॉर x स्क्वायर plus 2ax plus a square, now for this plus y square plus 2by plus b square। अब a square और b square दोनों को मैंने लिए लेफ्ट हैंड साइड में, सो माइनस a square plus b square इक्वल टू 0, प्लस a square माइनस a square चल बचा तो क्या बचा, x square, then plus y square, then plus 2ax plus 2ax plus 2by and b square plus b square plus 2b square equal to 0। तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि मैं यूज ये इक्वेशन कर रहा हूं, पर आंसर जो फॉर्म में आ रहा है वो देखो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चीज माइंड कर लेना आप कि जो भी फाइनल आंसर आ रहे हैं सारे आंसर्स में आपको देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो मिल ही रहे हैं। तो एक चीज आप नोटिस कर लो कि इन द फाइनल आंसर इन द लास्ट स्टेप वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। દ્વિચલ દ્વિઘાત સમીકરણ મળી રહ્યું છે દરેકે દરેક આન્સર્સમાં। ક્લિયર પોઈન્ટ? सी द नेक्स्ट फॉर्म, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। ये जो सम्स थे उसमें क्या था कि सेंटर और रेडियस दिए हुए थे और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें लाना था। इन दिस काइंड ऑफ सम्स इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। टू डिटरमाइन द सेंटर एंड रेडियस, केंद्र और त्रिज्या मेळववा माटे हमारे पास एक ही तो फॉर्म है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे ये फॉर्म में पूरे इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x एंड y। द्विघात समीकरण होવું જોઈએ પૂર્ણ વર્ગ સ્વરૂપનું। ઓલ્સો શુડ બી ધ પરફેક્ટ સ્ક્વેર ઓફ x, perfect square of y।
સેકન્ડ થિંગ, ઇન ધ મિડલ there should be minus, વચ્ચે માઇનસ નું ચિહ્ન હોવું જોઈએ. એના કરતા પણ થર્ડ થિંગ, the coefficient of x and y should be 1. ये बराबर याद रखना, एक x का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, y का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और x और y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. x અને y નો સહગુણક 1 હોવો જોઈએ. तो ये तीन चीज हम ध्यान में रख के आगे चलेंगे. तो आई थिंक ये सब में हमें थोड़ा रेडीमेड फॉर्म दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इज ओनली दिस, बाकी सब कुछ इजी है. तो मैं इसे कंपेयर करूंगा लाइक दिस, x माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, 36 means 6 square. So comparing with this equation, there will be hk equal to -5 3 and r is equal to 6. This is the required center and this is the required radius. कितना इजी हो गया. पर अभी आपको देखना है यहाँ पे ये तीन चीज बराबर माइंड कर लेना. सो फॉर 7th सम यहाँ पे हमें फॉर्म थोड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड था. तो x का परफेक्ट, y का परफेक्ट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी 1 1. तो देखो लेट वी स्टार्ट. x स्क्वायर, फिर x का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे -4x लिखा. अच्छा, फॉर दैट चलो फिर y स्क्वायर, y का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा -8y और 45 को मैंने लिया राइट हैंड साइड में. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें लास्ट टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी. लास्ट टर्म की फॉर्मूला हमारे पास है, लास्ट टर्म એટલે છેલ્લું પદ इज मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लास्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म. तो देखो अगर ओरली आपको आता है तो ठीक है, वरना यूज दिस फॉर्मूला. चलो, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर द लास्ट टर्म शुड बी 4. तो मैंने 4 ऐड कर दिया. आप यहां से फॉर्मूला से निकालोगे इट विल बी 4. फॉर दिस प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, हियर द लास्ट टर्म शुड बी 16 इक्वल टू 45. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 4 भी ऐड किया और 16 भी ऐड किया, तो मैंने वापस राइट हैंड साइड में पे कर दिया टू बैलेंस द इक्वेशन. नाउ इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x minus 2 whole square. It will be perfect square of x minus y minus 5 whole square equal to 45 plus 4 or 16 plus 4 20. 20 plus 45 will be 65. 20 plus 45 will be 65. So x minus 2 whole square plus y minus 4 whole square equal to root 65 square. Therefore center HK. Now you can compare this. The center will be 2 4 and radius R is equal to root 65. Clear point? The last sum 8th मैंने आपको होमवर्क में दिया है, लास्ट सम 9th में यहां पे कर रहा हूं. सी द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. फर्स्ट कंडीशन, the coefficient of x square and y square should be 1. So for that divide this equation by 2. Therefore x square plus y square minus 1 by 2x equal to 0. जो x square અને y square નો સહગુણક 1 બનાવવા માટે મેં સમીકરણને 2 થી ભાગ્યું. नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो x स्क्वायर, अब x स्क्वायर के साथ में मैं लिखूंगा x वाले टर्म्स, y स्क्वायर के साथ में y वाले टर्म्स. है ही नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं. चलो
what should be the last term for this? x square minus 1 by 2x. अगर इसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है देन व्हाट शुड बी द लास्ट टर्म? द लास्ट टर्म शुड बी 16 यानी 4. देखो मिडल टर्म स्क्वायर, सो 1 by 4x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म x स्क्वायर चल बसे, सो 1 by 16 होनी चाहिए. द मिडल टर्म शुड बी 1 by 16, सो प्लस 1 by 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, सो इट विल बी x माइनस 1 by 4 स्क्वायर प्लस, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे 1 by 16 ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी मैंने 1 by 16 ऐड कर दिया. अब सिर्फ y स्क्वायर है, सो वी विल राइट इन दिस वे y minus 0 whole square equal to 1 by 16 means 1 by 4 whole square. तो पूरा फॉर्म बन गया. therefore सेंटर HK will be 1 by 4 0 and radius R is 1 by 4. सो 8 सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यानी ये इतने सम्स करने से आपको इतना तो पता चलेगा, उसका जो बेस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा. राइट. सो आज का लेक्चर मैं यहां तक रखता हूं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे चलेंगे ये सम से, और जो फर्दर इक्वेशंस है, जे बीजा वर्तुळना स्वरूपो छे वो भी हम देखेंगे. ओके, सी यू, बाय बाय.